अच्छा जी। तो आज की क्लास में जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर नंबर 13 है हमारा मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्राइस। अब प्राइस इज अनदर पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एंड प्राइस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। प्राइस जो होती है, इट इज द वैल्यू गिवन टू अ प्रोडक्ट, और इट इज द रेट एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड टू द कंज्यूमर इन द मार्केट। और प्राइस जो है आपकी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कंज्यूमर्स इन द मार्केट आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। दैट मीन्स कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीदेगा तभी जब उसको अच्छी एक प्राइस मिलेगी। तो बेसिकली प्राइसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज प्राइसिंग से आपको जो है वो काफी ज्यादा चीजें अपने प्रोडक्ट की आप बेहतर कर सकते हो। देखो, प्राइसिंग अगर आप अच्छी रखोगे तो प्राइसिंग से क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की एक ब्रांड इमेज वगैरह बहुत बेहतर होगी। प्लस प्राइसिंग जो है वो अगर आप गलत रखोगे, लेट्स सपोज, तो ये मार्केट में कस्टमर को गलत सिग्नल देगा। फॉर एग्जांपल, एक लग्जरी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, लेकिन उसको आप कम प्राइस पे बेच रहे हो। तो वो प्रोडक्ट लग्जरी है, लेकिन मार्केट में आप उसको कम प्राइस से बेचोगे अगर, तो वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को लगेगा कि वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, हालांकि वो होगा बहुत क्वालिटी का। तो इसलिए प्राइसिंग जो है, इट मस्ट बी फिट विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इट मस्ट बी फिट for the market that you're targeting, and the price also should promote your product। क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को जब सेल करते हो तो वो एक अच्छे प्राइस पे अगर आप सेल करोगे तो उससे कस्टमर जो है वो दूसरों को भी जाके बताएगा प्रोडक्ट के बारे में। So before we talk about the different pricing strategy, let's first understand the concept of price elasticity of demand. Price elasticity of demand is the measure of responsiveness of demand due to a change in price। बेसिकली आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये मेजर करता है कि आपकी डिमांड में क्या चेंज आएगा अगर आप मार्केट में अपनी प्राइस को चेंज करते हो। सो इट कैलकुलेट्स द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस। सो पीईडी इज कैलकुलेटेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यूजुअली पीईडी की कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आते हैं आपके, वो यूजुअली दो तरीके के होते हैं। या तो आपकी पीईडी इलास्टिक होती है या फिर पीईडी इनइलास्टिक होती है। PED elastic होने का मतलब क्या है? The PED is greater than 1. For example, if there is a PED of answer 3.125, it means that the demand is elastic. And when PED is less than 1, for example, it is 0.25 with a minus sign, minus 3.125 and minus 0.25. And when we just ignore the minus sign and we see that 0.25 is less than 1, so it means the demand is inelastic. Now, elastic demand means that a slight change in price will cause a greater change in quantity demand, which means that the demand is highly responsive to a change in price. You slightly decrease the you slightly decrease the price, quantity demand will decrease greatly. And you slightly increase, sorry, if you decrease the price, the quantity demand will increase greatly. And when you decrease increase the price, quantity demand will decrease greatly. So basically the change in quantity demand is greater or highly responsive to a change in price. Whereas inelastic demand means that a change in price will not cause or cause very little change in the demand. Inelastic demand is basically when the change in price does not causes a significant change in the quantity demanded. No matter what the price is, the consumers will still be buying that particular product. So usually this is the case of the product that are needs. For example, the demand for life-saving drug will not fall because no matter what price they set, because it is a life-saving drug. So usually some products have elastic demand and some products have inelastic demand. So a manager must know the elasticity, because if managers have an elastic demand in the market, the managers will definitely set lower prices, because
when the demand is highly responsive to a change in price, a decrease in price will cause a greater increase in quantity demanded. So managers who know that they have an elastic demand, they will be charging a lower price. Whereas the managers who know that they have inelastic demand, they will be charging a higher price. For example, the cricket match of India and Pakistan usually have an inelastic demand. No matter what the price of ticket is, the consumers still buy it and they go and watch the match. Whereas the match of Bangladesh or Nepal will have elastic demand. So you have to lower the tickets so that the consumers purchase those tickets. So इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है आपके उनकी डिमांड मार्केट में इलास्टिक होती है, तो मैनेजर्स को प्राइस रिड्यूस करना चाहिए, और कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक होती है, तो मैनेजर्स को प्राइस बढ़ा देनी चाहिए. Then we have our different pricing strategies. The first pricing strategy is cost plus pricing. And cost plus pricing is a pricing strategy where you calculate the cost of manufacturing of the product and you add a profit markup to it. For example, a shirt manufacturer had a cost of manufacturing a shirt of at $5, and he wanted to earn 100% markup or 100% profit. So what he did was, to calculate the selling price, he multiplied the markup on cost. That means कि $5 पे उसने 100% calculate करा, so he got $5. This is the profit he wanted to earn. So the selling price that he set in the market was 5 plus 5, that is $10. And at $10, he sold the product in the market. So cost plus pricing is when you add the markup by calculating or multiplying the markup percentage with the cost and getting the profit, and then adding them both, the cost and markup, to get the selling price. So the benefit of cost plus pricing is that this method is easy to calculate and each product earns a profit for the business. Each product sold earns a targeted profit for the business. Like over here, the targeted profit is 36 because the markup is 36. So if we sell the shoes, so the shoes is every pair of shoes that is being sold, it is earning profit for the business. However, it does not consider the competition in the market. So competitors price को आप consider नहीं कर रहे होते इसके अंदर कि भाई competitor भी तो prices charge करते हैं. For example, यहाँ पे if you're selling the shoe for $66, whereas all the competitors are selling it for $40. So definitely the consumers will buy from the competitors. And it does not consider the consumer incomes as well. It only considers the cost and profit of the firm, what they have to earn, and it does not consider whether the consumers will be able to pay full or not. So the consumer income should also be considered when you're deciding the pricing strategy. Then we have competitive pricing. Competitive pricing is setting price in line or just below the competitor to attract more customers. आप अपने competitor के हिसाब से competitor से थोड़ा सा नीचे अपनी price set करते हो ताकि आप market में ज़्यादा customers को attract कर सको. So what are the benefits of having competitive pricing? That it could attract competitors' customers and it could increase sales, which can lead to higher profit. However, it could result in loss if cost is high. So usually competitive pricing might lead to business to loss if the cost of production of the product will be high. So to compete in the market, sometimes the competition gets so intense that कि आपके firms loss करना start हो जाते हैं, but they keep prices low so that the customer keep on buying from their business. Also, it can lead to a price wars as competitors might decide to reduce their prices as well. So if you set competitive pricing, so it might lead to price wars because competitor might also change their price. And thirdly, customer might perceive the product as a lower quality. If you're setting a lower price of your product, the consumer might perceive that the product is of lower quality. Then we have penetration pricing. What is penetration pricing? Penetration pricing is when price is set lower to enter into a new market, usually lower than the competitor's price.
तो जब आपको किसी नई मार्केट में एंटर होना होता है तो यूजुअली पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज विद द न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, तो न्यू प्रोडक्ट्स प्राइसिंग होती है कि व्हेन द प्रोडक्ट दे वांट टू क्रिएट अ मार्केट शेयर, they want to build a market share, what they do is they set price lower than the competitors to enter a market and attract more and more customers. Usually नए प्रोडक्ट के लिए ये प्राइसिंग होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग. So it is easy to enter into a new market and more customers are attracted. The benefits of this pricing strategy. Whereas the drawbacks are that customers may be disappointed if the prices are increased later on. For example, you set up a lower price to enter the market, but gradually, when customers start demanding your product, you gradually increase your prices. So the customer might be disappointed in that. Secondly, customers might perceive the good as a lower quality. They might perceive the good that it is of lower quality. The good is not good because it is being sold at a lower price. So again, the consumer might perceive that if you're selling at lower prices. Then we have price skimming. Price skimming is when the business set a high price of the product when it's entering into a new market. It is completely opposite of penetration pricing. Price skimming में आप क्या करते हैं? Price skimming में आप ज़्यादा higher price charge करते हैं of your product and prices are reduced later on to attract a larger customer base. So usually when you enter a market, you know there is no competition. Usually ये innovative products होते हैं. When you know there is no competition in the market, you charge a higher price. But gradually as the competition enter the market, other businesses start copying your product, then gradually you start to reduce your prices. So the benefit is that often used for technologically advanced product as they are completely new in the market, and it leads to higher profit and your research and development cost is covered. Plus gives the product an exclusive image as well. It gives the product exclusivity, that the product is exclusive, the product is new. So more and more people are attracted to buy it to get the exclusivity. However, if the price is set very high and then lowered, the customers might be disappointed who bought it at a higher price. So those customers who buy, let's suppose, iPhone at a higher price, and later on the iPhone prices are reduced, so they might be disappointed that हमने महंगा खरीद लिया. And secondly, it can also damage the brand image because what actually happens is that कि अगर आप प्राइस हाई रखते हो और बाद में उसको लोअर कर देते हो तो अगेन कस्टमर्स को ये लगता है कि ये ब्रांड अब सस्ता हो गया, ये ब्रांड जो है वो चीप क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर रहा है. देन वी हैव साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज बेसिकली व्हेन यू set your prices in such a way that the consumer perceive it as a lower price. For example, 9.99 or 9.95 या 99 $0.99. इस तरीके से आप अपनी प्राइसिंग सेट करते हो ताकि इंस्टेड ऑफ सेटिंग $1 यू सेट 0.99 ताकि प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सस्ता लगे. देन वी हैव प्रमोशनल प्राइसिंग. प्रमोशनल प्राइसिंग क्या होती है? प्रमोशनल प्राइसिंग इज बेसिकली व्हेन यू सेट द प्राइसेस वेरी लो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल रमजान आ गए तो रमजान में आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस थोड़ी कम कर दी ताकि लोग आके रमजान की प्रमोशन से आपके प्रोडक्ट ज्यादा खरीदें. लेट्स सपोज केचप मैन्युफैक्चरर है डिपिट, उसने अपने प्राइस पे ₹100 ऑफ लगा दिया. फॉर एग्जांपल इफ द केचप इज ऑफ 300, उसने 200 का सेल करना शुरू कर दिया दिस रमजान. सो दैट इज बेसिकली प्रमोशनल प्राइसिंग. तो प्रमोशनल प्राइसिंग इज बेसिकली टेम्पररी यू आर सेटिंग लो प्राइसेस ताकि आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में जो है वो सेल ज्यादा हो. So the benefit of this is basically that business gets rid of unwanted inventory and customers' interest in the product remains for a longer period. Usually, if you're setting the pricing at an introduction, तो usually क्या होगा, customer आपके product में interested रहेगा, ज़्यादा time उसको consume करेगा because you are giving a promotion. However, losses can be made basically because if you're selling at a promotional rate, so you have to sell at a lower price, which might lead to business making the loss. Competition might increase, other business might also reduce the prices. So other businesses might also start their promotion, and so the competition might increase. And thirdly, the customers might not buy after increase in price.
प्रमोशन थी, कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया, आपने प्राइस वापस बढ़ा दी, कस्टमर ने खरीदना बंद कर दिया. So that can also be a drawback. And then the last pricing strategy we have is dynamic pricing. Dynamic pricing is when the business charge the prices according to the customer's ability to pay. Usually dynamic pricing जो है, dynamic pricing आप कब charge करते हो कि आप जब different group of customers को differently charge कर रहे होते हो. Usually ये ऑनलाइन सेल जो प्रोडक्ट कर रहे होते हैं उनको आप जो है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हो ताकि वो प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे करें. जैसे फॉर एग्जांपल एयरलाइंस है, तो एयरलाइंस अपने प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चार्ज करती हैं. एयरलाइन के टिकट्स, कोई ज़्यादा टिकट के पैसे देकर आता है सेम फ्लाइट में, कोई कम पैसे देकर आता है सेम फ्लाइट में. तो ये अगर फॉर एग्जांपल मेरा ट्रैवल एजेंट है, मैंने उससे ख़रीदा, उसने मुझे ज़्यादा टिकट महंगा बेचा है. अगर मैंने टिकट डायरेक्ट ख़रीदा होता तो वहां पे मैंने कोई अपनी प्रमोशनल कोड लगा के वो टिकट मैंने सेम टिकट मैंने सस्ते में खरीद लिया. तो दिस इज व्हाट डायनामिक प्राइसिंग इज, कि आप जो है वो कस्टमर से डिफरेंट ग्रुप से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हो. अम्यूजमेंट पार्क ये बहुत ज्यादा करते हैं. अम्यूजमेंट पार्क क्या करते हैं? अम्यूजमेंट पार्क बेसिकली दे चार्ज डिफरेंटली फ्रॉम एज ग्रुप्स. 1 to 5 years, let's suppose they are free of cost. 6 till 14 years, they have 2,000 rupees ticket, and 14 plus adults, they have 3,000 rupees ticket. So now for the same price, the same product, that the entry in amusement park में एंट्री करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टिकट्स खरीदने पड़े. सो द सर्विस इज सेम बट यू हैव टू परचेज डिफरेंट टिकट्स. ये वाले तो फ्री हैं, लेकिन ये वाले जब जाएंगे तो वो इनको टिकट्स खरीदने पड़ेंगे, द अडल्ट्स. So basically they have the highest price over here. What they are actually doing is they are covering the cost by setting this free. बच्चे तो जाएंगे, जिद करेंगे अम्यूजमेंट पार्क में जाने की, तो इनको टिकट खरीद के जाना पड़ेगा अम्यूजमेंट पार्क. सो 6 to 14 years दे हैव 2,000 रुपीज टिकट. तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स को डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हो फॉर द सेम पर्टिकुलर सर्विस. अम्यूजमेंट पार्क में सेम झूले हैं, सबके लिए अवेलेबल है, सही, हर कोई उनको जो है वो राइड कर सकता है. लेकिन अगेन you're charging for the same service, you're charging differently to the customers. So this is basically the marketing mix price, और यहाँ पे हमारा pricing जो है वो खत्म होता है. So it was quite a short one, and ये पी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बिजनेस की एक साइकोलॉजिकल इमेज क्रिएट करता है, और प्रोडक्ट के साथ इसको एसोसिएटेड होना चाहिए, इसको प्रमोशन के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, इसको प्लेस के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए. एक सिंपल सी बात है कि एक महंगा प्रोडक्ट एक अच्छी जगह पे मिलना चाहिए, उसकी प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी कस्टमर जो है वो उसके ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होगा. आप जितने भी प्राइसिंग हाई कर लो, लेकिन प्रोडक्ट दिखने में अच्छा नहीं है, आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन अच्छी नहीं है, आपके प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अच्छा नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट के लिए कभी भी जो है वो आपका बिजनेस, आपका कस्टमर कभी भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगा. सो दिस आर द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर CIEs. तो प्राइस यहाँ पे खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रमोशन स्टार्ट करेंगे. सो एनी क्वेरीज गाइस?